How are you today? I'm Dr. Paramjit and welcome to Unacademy. So this is an integrated session where we will discuss about anatomy and physiology. And I would like to welcome my fellow Dr. Ankit Khandelwal. He is the anatomy tutor with us, a very specialized and very knowledgeable person. So welcome, Dr. Ankit. Thank you so much, Dr. Paramjit, and glad to be here. Welcome, all of you. Today, we also have with us Dr. Paramjit Singh, sir, an eminent physiologist, very knowledgeable, and we both will be try to share our knowledge and experience in a very, very important clinical topic that is a coronary circulation, and we all know what the clinical aspects of this. So that is what the importance of this topic. So let's start with the coronary circulation. And before we start with the lecture, I would like to introduce some slides to you. So here we have a test calendar, which you can see. So from this March 20 till 27th March, you can note that there are so many free tests available where you can just put codes of your desired tutor. So वो आप कोड डाल के इसे एक्सेस कर सकते हैं. एंड एज यू नो हमारे AI ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होने वाला है 27th को 9 AM. डू नॉट मिस दैट. दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी you can access this by putting the code. ठीक है. And there are so many more things. Just go on. Previous questions, PYQs 23rd को एक dedicated session है. Don't miss that. And we are launching MBBS Prof 1. So ये वाली चीज में भी आपको in depth पूरा coverage मिलेगा knowledge का. Do not miss this opportunity if you are looking forward for such an education. And very, very congratulations to our FMG December toppers. So you can be one of them next time. And these are some few special classes, high yielding theory classes, right, for just 1.5 months. So 1.5 महीने का ये वाला सेशन अगर आप ज्वाइन करना चाहें. And this is a 2-month session, revision session, MCQ batch, right? So this is also very nice. And one more thing, we have light subscriptions now, which you can access. So this light subscription can very well be accessed by like simple 2000 से शुरू होता है. So there are so many options which you can opt for, right? So let's start with the anatomy and handing over the mic to Dr. Ankit. Thank you so much, Dr. Paramjit ji. Chaliye. All of us, let's start with this coronary circulation, and I'll be taking the anatomy part of it. As you must be knowing, I'm an anatomy educator, and sir is our physiology counterpart over here. So this is the first slide. If you look at this slide, this is showing us the heart, the human heart anterior view. It's a dissected image over here. And mind you, this is the anterior view. ये हमारा anterior view है, and the pericardium has been reflected back. आप देख सकते हैं ऊपर थोड़ा सा pericardium reflect back है. But importantly, two things majorly we can see over here. First is the location and the prominence of the heart. आपका anatomy अगर heart को देखिए, then heart is present in the center, slightly tilted towards left. तो नीचे आप देखेंगे apex की तरफ है, left side में. That is fine. But with the current topic, that is a coronary circulation, we can see few vessels. जो आपको tortuous से कुछ vessels दिख रही हैं, these are the coronary vessels and their prominent eminent branches over here. These are the coronary vessels. So these are the vessels which are getting stenosed or atherosclerosed, and after that the angina or the MI pain and all that starts. So our focus for today will be these coronary vessels, just to show you कि ये vessels हैं कहाँ पर, what is the location. Now one thing I want to clear over here, not one but two things. First of all, heart supplies blood to all the body, but what will supply the heart? That is the coronary circulation. तो ये तो गई definition. Second point, these are branches of what? ये कहाँ से आ रही हैं? Because heart तो पूरी body को blood दे रहा है, पर ये कहाँ से आ रही हैं? तो mind you basics, these are the branches from the initial part of aorta. जैसे ascending aorta निकलता है from the left ventricle, there are few sinuses in the ascending aorta that also we'll see in the other images. So these are the branches from the ascending aorta. ठीक? The third thing which we should be knowing is कि where do these vessels lie? मतलब anatomically heart में कहाँ run करेंगी? कहीं भी चली तो नहीं जाएंगी. So these are very important vessels. So mind you, the coronary arteries and coronary groove. Anatomy, coronary arteries or coronary groove.
तो कोरोनरी ग्रूव होता है which is between the atria and ventricle. So coronary arteries run in the atrioventricular groove. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. I will repeat again. Coronary arteries run in the coronary groove, also known as atrioventricular groove. So atrioventricle के बीच में जो groove बना, वहां पर there the main trunk of the coronary arteries will be running. अब जो डॉक्टर साहब ने नेक्स्ट इमेज दिखाई है, ब्यूटीफुल अगेन डिसेक्टेड इमेज, बट यहाँ पर व्यू डिफरेंट है. इनिशियल प्रीवियस में वी सॉ द एंटीरियर व्यू, हियर वी आर सीइंग द सुपीरियर व्यू. जैसे कि आप हार्ट को ऊपर से देख रहे हो, जैसे आपका ट्रैकिया में कैमरा लगा है, वहां से आप हार्ट को देख रहे हो, इमेजिन फ्रॉम देयर. तो जो उसमें ऊपर अपर पार्ट ऑफ द स्क्रीन एंटीरियर है, लोअर पार्ट ऑफ द स्क्रीन पोस्टीरियर है, आर्म में राइट साइड में राइट है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट है. तो ये इसका हो गया कि ये समझना कि व्यू लिया कहां से है. सो अपर पार्ट इज एंटीरियर, लोअर पार्ट इज पोस्टीरियर. अब सर व्हाई दिस इमेज, ये इमेज का भी रेलेवेंस क्या है, ये अगर आपके माइंड में सवाल आ रहा है, देन द पॉइंट ऑफ दिस द इमेज इज कि यू आर सीइंग फ्यू वेसल्स ओवर हियर. जो ओरिजिन ऑफ द ग्रेट वेसल्स हैं, मोस्ट एंटीरियर यू विल सी अ वेसल. नाउ दैट इज अ वेसल कमिंग आउट ऑफ राइट वेंट्रिकल, दैट इज पल्मोनरी ट्रंक. तो सबसे ऊपर जो आपको एक बड़ी सी वेसल दिख रही है सर्कल, दैट इज अवर पल्मोनरी ट्रंक. उसके नीचे जस्ट बिलो दिस you get this thick one that is our aorta. जो thick vessel दिख रही है, that is the ascending aorta. So our focus is over here, that where is the ascending, this is the, जैसे सर ने अभी सर्कल किया, this is our ascending aorta. Now look at the difference in the thickness of the aortic trunk. Reason very simple है, sir could explain better कि भाई जिसको पूरी ब्लड को सप्लाई करना है, it has to have thicker walls because pressure ज्यादा है. जिसको खाली लंग्स में ब्लड भेजना है, it only has to send blood to the lungs from heart to lungs, उसका थिकनेस कम है. तो प्रेशर इज, pulmonary pressure is, artery pressure is less than the systemic blood pressure. So ये aorta हो गया. aorta में if you see inside the aorta, you will see few sinuses. कुछ उसमें sinus, कुछ cups बने हुए हैं. These are the sinuses. They are, yes, these are the few of the aortic sinuses. ये aortic cusp हैं, उनके अंदर जो gap बना, that is the aortic sinus. Now there are three sinuses as sir is beautifully highlighting over here. अब इसमें से हमारे पास आर्टरीज हैं दो, राइट एंड द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी. एंड एज सर हैज ऑलरेडी डिपिक्टेड कि राइट साइड कहां है, लेफ्ट साइड कहां है. तो आपको एंटीरियर और राइट में एक जो साइनस दिख रहा है, वहां पे जो ओपनिंग है, एक ब्लैक डॉट है, दैट इज द ओरिजिन ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी. तो राइट कोरोनरी आर्टरी यहां से निकलेगी. एंड जो लेफ्ट में एओर्टिक साइनस है, फ्रॉम देयर द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी विल इमर्ज आउट. तो ये तो हो गया, ये आर्टरीज आ कहां से रही हैं, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी. अब इसमें हमें ये भी समझना है कि when the heart pumps the blood, the heart ने contract किया, blood को pump किया, blood went to the aorta, and when there is a diastole, then this cusp, this sinuses fill with blood and blood comes into the right and left coronary artery to supply nutrition and oxygen to the pumping heart. तो ये तो हो गई बात origin right और left coronary artery की. I hope it is very clear. कोई डाउट हो तो पूछे. यहाँ पर ये हमारे origin है right and left coronary artery का, which is very important to understand. After this I hope this is clear. We can move to the next slide, sir. This is a beautiful image, anterior view. आप इसको फिर से anterior view से देख रहे हो, but here it is not a cadaveric image, but similar है, but understanding के लिए easy है. So we all know that this is the anterior view of the heart. अभी देखिए इसमें दो तीन चीजें we have to be very clear. We all know that there are four chambers in the heart: right, left auricle, and a right, left ventricle. The major surface, the anterior surface or anterior surface of the heart, the chamber उसमें main है, that is the right ventricle. Right border जो heart का बना रहा है, that is the right atrium. तो right border जो heart का दिख रहा है, where ऊपर नीचे you can see the blue color vena के पास, वो right atrium हो गया. But the major chunk जो heart का सामने है, that is the right ventricle. और जो left border है, that is the left ventricle. Now here you are seeing some of the vessels. कि जी कुछ vessels जा रही हैं, but यहाँ पर what we are able to see is only the right coronary groove. हम यहाँ पर सिर्फ right coronary groove देख रहे हैं. अब आता है मन में सवाल, सर left coronary groove कहाँ चला गया? Because the left atrium is on the back of the heart, base of the heart, so left coronary groove is basically hidden from the left auricle. तो वो इतना नहीं दिखता है. But here we are seeing the right coronary groove, and from there the right coronary artery as is labeled below. अब नीचे देखेंगे labeled है right coronary artery. तो वहां पर आपकी right coronary artery जो कि जा रही है between the right atrium and the right ventricle. और फिर उसकी branches हैं, these are all the branches, marginal artery है और different arteries हैं. But I hope the point is clear कि coronary arteries आ कहां से रही हैं, वो travel कहां पे करती हैं. तो main trunk, उसकी branches सब जगह जाएंगी. Branches will go and supply every part of the heart, but we should be knowing the main trunk, vessels का कहां पर है, because अब इसकी point आता है, सर इसकी anatomy जान के करें क्या?
when you will be doing the angiography, then you should be knowing कि blood कहाँ पे obstruct कर रहा है. You should be knowing their course. ये artery का course कहाँ है. तो अगर course clear हो गया, then you will be able to visualize and you will be able to interpret the angiographic image. This was the anterior view. I hope इस image में से we can figure out this. हाँ, same thing. If you now look in a dissected heart, you now look in the dissected heart, same thing. Anterior view है, बट अब बल्क देखो हार्ट का सामने, इट इज द वेंट्रिकल व्हिच इज बल्की, बिकॉज़ वेंट्रिकल वी ऑल नो हैज अ थिकर वॉल. सो ये सारा का सारा वेंट्रिकल है एक्सेप्ट द राइट बॉर्डर जो कि राइट एट्रियम है, राइट बॉर्डर राइट एट्रियम. नाउ इफ वी कंसीडर अवर नॉलेज राइट कोरोनरी आर्टरी, लेट्स स्टिक टू द राइट कोरोनरी आर्टरी फर्स्ट ऑफ ऑल. एक राइट कोरोनरी आर्टरी पे स्टिक रखते हैं. then you can see the right coronary artery over here which is already labeled between the right atrium and the right ventricle. तो ये हुआ हमारी right coronary artery which is running between the right atrium and the right ventricle, a thick walled artery. आप देखिए इसकी thickness देखिए कितनी ज्यादा है right coronary artery की. और फिर ये नीचे जाकर at the lower border it gives of the acute marginal artery. अब ये नाम से हम या कह दिए कि इसका नाम कैसा है, how did the name came. तो नेम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द लोकेशन. अब ये राइट साइड में मार्जिन पर रन कर रही है, तो इट इज नोन एज एक्यूट और राइट मार्जिनल आर्टरी, क्योंकि नीचे जाएगी इंफीरियर बॉर्डर पर और ये मार्जिन पर रन कर रही है. इट इज नोन एज द राइट मार्जिनल और द एक्यूट. एक्यूट क्यों? क्योंकि एंगल इसका ज्यादा नहीं है, इट टेक्स अ बिलो 90 डिग्री, सो वी कॉल इट एज एन एक्यूट मार्जिनल आर्टरी. सो ये एक्यूट मार्जिनल आर्टरी हो गई. अब एक और बड़ी वेसल आ रही है सामने between the right ventricle and the left ventricle, which is labeled over here as the anterior interventricular artery. This is the main culprit artery, also known as the widow's artery. क्यों? क्योंकि it is the most common artery to get sclerosed, to get thrombosed and emboli जो हैं basically यहीं पर develop होते हैं. Most common 60-70% cases are in the anterior interventricular artery. अब नाम देखिए बड़ा सिंपल है, आगे है anterior है, दोनों ventricle के बीच में it is interventricular artery. Most common artery to get blocked in cases of angina and MI. Now other thing over here is इसकी जो anterior interventricular artery है, it is running between right and left ventricle, so it will give branches to both right and left ventricle, and it will also give some of the branches which are known as diagonal arteries. अब diagonal artery क्या कर रही हैं? They are supplying the left ventricle. So anterior view अगर हम देखेंगे, then we will be seeing the anterior interventricular artery and the diagonal branches. Diagonal branches क्या supply करेंगी? They are going towards the which chamber? Left side में जा रही है, so they are going to supply the left ventricle. So left ventricle में इतनी बड़ी artery क्यों चाहिए? Because it is the thickest wall in all the chambers is the left ventricle, so it needs more blood supply क्योंकि tissue ज्यादा है, oxygen ज्यादा चाहिए, nutrition ज्यादा चाहिए. These are the diagonal arteries which are coming from the anterior interventricular artery. So I guess the anterior picture is clear. Right coronary artery and anterior interventricle. अब anterior interventricle से किसकी branch होगी? तो यहाँ पे hidden है is the left coronary artery, which we are not able to see over here. It is behind these this pulmonary trunk और जो इसके पीछे aorta है. I hope we all can see the aorta labeled है ऊपर. तो वहां पे imagine कीजिए कि pulmonary trunk के पीछे से LCA emerged out, left coronary artery emerged out. Then LCA suddenly it bifurcates into two arteries. तभी हम कहते हैं कि भी हार्ट में if we talk in a clinical way, there's a 2 vessel disease, 3 vessel disease. Basically हैं तो arteries दो, the right and left coronary artery, but left coronary artery as soon as it goes out it bifurcates into two arteries, and therefore left coronary artery में दो artery हैं, एक आपने सामने देख ली anterior interventricular, and second bifurcation is the circumflex artery. वो भी आप देख सकते हैं जो right side में labeled है, there is this circumflex artery. circumflexor नाम क्यों दिया गया? Because it is circumflexing around, ये ऐसे घूम जाती है, जैसे आपको याद हो circumflex nerve, axillary nerve घूमती है, उसी तरह से ये circumflex artery है. It moves around, it winds around the left border of the heart, so इसको नाम दिया गया circumflex artery. अब एक चीज और हम यहाँ पे समझ सकते हैं, और अगली we will see in the next images, but in this image we can understand, जैसे we have seen this right or the acute marginal artery that is coming from the right coronary artery, हमने नीचे देखा that acute or the right marginal artery, same way जैसे ही artery left border पे जाएगी, and which artery is that? That is our left circumflex or simply circumflex artery. At the left border it will give the left marginal artery. अब इसका angle is more than 90 degree, तो वहां जहां से निकलती है it is known as obtuse marginal artery. So circumflex की branch होगी left or the obtuse marginal artery. Circumflex की branch होगी left or the obtuse marginal artery, और जो right coronary artery की branch है that is our right marginal artery. I hope that this point is clear. Sir, can we move to the next slide? हाँ, अब ये क्या है?
अगेन these are all the different images just to make आपको दिमाग में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई ये आर्टरीज का जो कोर्स है वो क्या है. अगेन एंटीरियर व्यू डिसेक्टेड हार्ट, बट ये कास्ट बना हुआ है. व्हाई व्हाट वी डू इन एनाटॉमी इज हम हार्ट को लेते हैं, then we after all the preparation we inject the dyes inside, जिसमें कास्ट होते हैं, उसको हम क्रिस्टल्स होते हैं उसको हम पिघलाते हैं फिर डालते हैं. कास्ट, these are the casting images. तो वेसल्स में just like angiography in a living person, in cadavers and anatomy we do it on a dying in a cadaveric heart. उसमें dyes डाली गई into the arteries so that all the branches we can see. अब again looking at the image एक चीज हमें क्लियर होनी चाहिए कि this is the anterior view या posterior view. आप देखिए सामने thick walled है, ventricle है, and you can see the pulmonary trunk and the aorta. आपको क्लियर हो गया एंटीरियर व्यू है, यू कैन वेरी वेल सी कि भाई राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी आर्टरी होगी. बिटवीन द आरए दैट इज द आरसीए व्हिच इज रनिंग डाउन. सो दिस इज द आरसीए. अब आरसीए नीचे गया, देन यू कैन सी द एक्यूट मार्जिनल आर्टरी जो कि इंफीरियर बॉर्डर पर रन कर रही है. दैट इज अवर राइट मार्जिनल आर्टरी. जस्ट अ सिंपल रिवीजन. अब इफ यू गो ऑन द लेफ्ट साइड, ऊपर भी देख लेते हैं, we are seeing two vessels coming at the top behind the pulmonary trunk में दो रेड कलर की वेसल निकल रही हैं. This is the bifurcation of the LCA. ऊपर वाली हो गई circumflex, this one जो सर ने पॉइंट कर रखी, this becomes a left circumflex और circumflex, और ये thicker one है that becomes the LAD. इसको LAD भी बोलते हैं. LAD क्यों? Left anterior descending artery. दूसरा नाम AIA anterior interventricular artery. other different names हैं, लेकिन क्लिनिकली आप किसी का इको पढ़ो, किसी का एंजियोग्राफी की रिपोर्ट पढ़ो, उसमें LAD नॉर्मली लिखा जाता है. तो याद रखिए LAD and anterior interventricular, these are the same arteries. Anterior interventricular में से we also can see some of the diagonal branches जो कि नीचे जा रही हैं. But this is a heart जिसमें कि vessels को cast किया गया है, and then we can see all these things. So anterior view में I hope the branches, the course we are able to see, and other branches also over here. Branches की बात अभी करेंगे. What are the different branches? Let's move to the next slide, sir. हाँ, अब ये हो गई हमारी बुकिश इमेज. सेम थिंग, अब इसको और ब्रांचेस, अब इसमें क्या करना है, ब्यूटीफुल इमेज ओवर है. अब सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. हाँ कॉम्प्लिकेटेड है, बट वी हैव टू गो स्टेप वाइज. इसमें धीरे धीरे स्टेप वाइज चलना है. पहले लेते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी, फिर लेते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी. इसमें सारा कुछ, सारी ब्रांचेस, सारा कोर्स, सब कुछ क्लियर है. अगर ये आपने समझ लिया सब लोगों ने इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स, देन ऑल योर कंफ्यूजन विल बी क्लियर. अब ध्यान से वी स्टार्ट विद द राइट कोरोनरी आर्टरी. Before starting, let me tell you all over here that there are two arteries. We already know the right and the left coronary artery. Question ये आता है सर, बड़ी आर्टरी कौन सी है? Which is the bigger one out of these two? जिसमें ज्यादा ब्लड होगा, बड़ी आर्टरी कौन सी है? The answer of this question is the left coronary artery is a bigger artery than the right coronary artery. ऐसे 2-3 reasons समझ लो. Left coronary artery supplies the left part of the heart. So we know left ventricle is the biggest, so left coronary artery. Second point समझिए, if we look back into the case, let me correlate it with the carotid artery. अब आपने स्ट्रोक सुना है. स्ट्रोक में हम कहते हैं ब्रेन में स्ट्रोक आ गया. which is the most common artery involved in the brain for the stroke? Answer is always, nearly always, middle cerebral artery. क्यों? It is the biggest branch of the internal carotid artery. Same way over here, क्योंकि LCA बड़ी है RCA से, and the LC bifurcates into LAD. LAD में therefore there are more chances of atherosclerosis or emboli or obstruction in the LAD, क्योंकि LCA बड़ा है. ठीक, तो ये हो गई बेसिक बात. अब आते हैं RCA के कोर्स पे, जैसे सर अभी हाईलाइट कर रहे हैं. अब देखिए RCA is shown by the purple color and LCA is shown by the red color. तो अब तक क्लियर हो चुका है. Then the posterior branches और posterior course में थोड़ा सा कलर पेल है. If you look at the purple, the purplish, जो purple है जो pale हो चुका है, that is lying posteriorly. If you look at the red one, जो orange बन गया है, that is lying posteriorly. तो ये तो हो गया basic framework. अब चलते हैं RCA start करते हैं. RCA came out from the aortic sinus. इसमें देखिए we also can see the aortic sinuses. उसमें कुछ aortic sinuses बने हैं. इसमें RCA के नीचे लिखा है outlines of anterior aortic sinus, right posterior, left posterior. तो ये aortic sinuses भी इसमें diagrammatically दिखाए गए हैं कि think concept should be clear कि ये these are the aortic sinuses. तो इसमें निकली हमारे RCA. RCA I told you coronary artery runs in the coronary groove. तो it is running between right atrium, right ventricle. ये नीचे आ रही है. ठीक, ये हो गया कोर्स. अब देखिए इसी कोर्स में हम एंटीरियर कोर्स पे रुकते हैं. And now we try to understand इसकी ब्रांचेस क्या होंगी. भाई कोर्स तो ठीक है, पर ये ब्रांचेस किसको दे रहा है? And you have to understand कि where the most important, because in heart clinically हम पढ़ते हैं भाई arrhythmias हो गया, इसको ये ब्लॉक हो गया, वो ब्लॉक हो गया. We should be knowing anatomically SA node, AV node है कहाँ. SA node कहाँ है? In the right atrium, where the SVC opens in the right atrium, वहाँ पे SA node है. AV node कहाँ है? AV node lies in the interatrial septum.
जो राइट और लेफ्ट एट्रिया के बीच में सेप्टम है, वहां पर जो हमारा वो ट्रायंगल ऑफ कॉक्स ट्रायंगल बनता है, वहां पर रखा है हमारा एवी नोड। तो एसए नोड, एवी नोड आर लाइंग अराउंड द राइट एट्रियम, इसलिए व्हेन द राइट कोरोनरी आर्टरी स्टार्ट्स इट विल गिव द साइनो एसए नोडल आर्टरी। जस्ट उसके ऊपर लिखा है, राइट कोरोनरी आर्टरी के ऊपर लिखा है एसए नोडल आर्टरी। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड मेजॉरिटी ऑफ द केसेस एसए नोडल ब्रांच इज कमिंग फ्रॉम द राइट कोरोनरी आर्टरी। ये एक फंडा क्लियर हो गया। देन हम राइट कोरोनरी आर्टरी को नीचे ट्रेस करते हैं बिटवीन द आर ए आरबी। अभी आर ए आरबी के बीच में जा रही है। अब कॉमन सेंस है, जो नदी जहां से जाती है पानी वहीं के एरिया को देगी, कॉमन सेंस वाली बात। सो एज द राइट कोरोनरी आर्टरी इज रनिंग बिटवीन आर ए आरबी, इट विल गिव ब्रांचेस टू आर ए आरबी। कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कुछ नहीं है, हमें बहुत डिटेल में कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। सो इट गिव्स ब्रांचेस टू आर ए आरबी। अब आ जाइए नीचे, इंफीरियर बॉर्डर पर आरसीए पहुंच गई। एज वी ऑलरेडी हैव डिस्कस, सबसे नीचे लिखा है राइट ब्रैकेट में एक्यूट मार्जिनल आर्टरी। तो ये हो गई हमारी राइट और एक्यूट मार्जिनल आर्टरी। अभी किसको सप्लाई कर रही है? ऑब्वियसली इट इज सप्लाइंग द inferior surface of the heart plus the lower part of the right ventricle। ये सब कुछ यहाँ सप्लाई करती है। अगला सवाल आता है, सर ये आर्टरी कहाँ तक जाएगी? Now we can very well see कि our right marginal artery is running towards apex। apex से थोड़ा पहले आगे खत्म हो जाती है। तो ये हो गई बात, right marginal खत्म यहाँ पर। तो what it supplies the lower part of the heart and basically the lower part of right ventricle। अब देखिए right coronary as it reaches the inferior border, अब ये पीछे जा रही है, color becomes pale। अब हो गया pale color। यहाँ के बाद एक्सेलेंट, यहाँ पर सर ने ऐसे भी एरो बनाया, तो ये अब पीछे जा रही है। इट इज गोइंग पोस्टीरियरली, कलर हैज बिकम पेल, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब ये कहाँ रन करेगी? माइंड यू इट इज आरसीए, तो ये हमेशा राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में ही रन करेगी। तो ये अब नीचे जा रही है, व्हाट विल इट सप्लाई? कॉमन सेंस अगेन, लोअर पार्ट ऑफ राइट एट्रियम एंड द लोअर इंफीरियर और द लोअर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल। अब ये पीछे जाते 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 अब ये एक पॉइंट पे आती है यहाँ पे। व्हाट इज दिस पॉइंट नोन एज? एनाटॉमिकली इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग, वी कॉल इट एज द क्रक्स ऑफ हार्ट। CRUX, वी कॉल दिस पॉइंट एज द क्रक्स ऑफ हार्ट। अब सवाल आता है, सर ये क्रक्स क्या आ गया? नया वर्ड आ गया? कुछ नया वर्ड नहीं। जहां पर सारे ग्रूव्स मिलते हैं इन द पोस्टीरियर पार्ट, दैट एरिया इज नोन एज द क्रक्स ऑफ हार्ट। उसको हम लोग बोलते हैं क्रक्स ऑफ हार्ट। यहाँ पर कौन कौन से ग्रूव्स मिलते हैं? द मीटिंग पॉइंट ऑफ द इंटरएट्रियल ग्रूव, द राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी ग्रूव। तो सारे ग्रूव जहां पर आके मिलते हैं पीछे, उसको बोलते हैं क्रक्स ऑफ हार्ट। तो द RCA winds around और it reaches the crux of heart। अब यहाँ पर स्टोरी खत्म नहीं हो रही है। RCA का फिर देखिए, फिर आप एक, it is running below and towards the left side, that is known as the inferior or the posterior interventricular artery। इसको क्या बोलते हैं? इसको we call it as a inferior or the posterior interventricular artery। जैसे हमारे एक काउंटर पार्ट था, आगे हमने डिस्कस किया LAD आर्टरी, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, उसका काउंटर पार्ट है पीछे, दैट इज द इंफीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। अब दिस आर्टरी, सब लोग याद रखना इस बात को, whichever coronary artery gives this inferior interventricular artery, उसको बोलते हैं dominant circulation। So normally majority of cases, 70-80% cases में the posterior interventricular, दूसरा नाम दे दो उसको inferior interventricular, is a branch from the RCA। So normally most of us have the right dominant circulation। तो अब let us trace this। अभी inferior interventricular artery कहाँ जा रही है? It is going towards the apex। So apex पहुंचती नहीं है, it goes towards the apex, और कुछ दूर उससे पहले, some part before it, it ends over here। This is the inferior interventricular artery। inferior क्यों बोला? क्योंकि अगर आप देखो, हार्ट रखा है डायफ्राम के ऊपर, डायफ्राम नीचे है, उसके ऊपर हार्ट रखा है, then we have the pericardium। This basically literally it is the inferior surface, it is the inferior। इसको बोल देते हैं inferior और posterior बोल सकते हैं। अब एक हमने बात की थी ऐसे नोडल आर्टरी की स्टार्टिंग में। अब मैंने आई टोल्ड एट दैट टाइम, वेयर इज एवी नोड? इट इज बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एट द क्रक्स ऑफ द हार्ट वेयर द RCA gives of the posterior interventricular, at that point it gives the AV nodal branch। जैसे inferior interventricular के जस्ट ऊपर लिखा है AV nodal artery, so right where the at the crux where the RCA gives the inferior interventricular, वहीं पर देती है AV nodal artery। So majority of the cases ऐसे नोडल आगे है, that is the LAD artery और the anterior interventricular artery, और जो साइड में जा रही है that is the circumflex artery। These two arteries we can very well see। the LAD आर्टरी जो कि एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है, सामने जा रही है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, इन दो आर्टरी के बीच में ये पूरी थिकनेस इज द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब उसमें आप ध्यान दीजिए, which branches are more, किसकी ब्रांचेस ज्यादा एरिया कवर कर रही हैं? इज इट द ऑरेंज वन और द पर्पल वन? वी वेरी वेल कैन सी दैट मेनली ऑरेंज वाली ज्यादा सप्लाई कर रही है। देयरफॉर
जो इंटरवेंट्रिकल सेप्टम है उसका जो एंटीरियर 2/3 है दैट इज सप्लाइड बाय द एलईडी आर्टरी, और जो इंटरवेंट्रिकल सेप्टम का जो पोस्टीरियर 1/3 है और जो इंफीरियर 1/3 है दैट इज सप्लाइड बाय द इंफीरियर और द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकल आर्टरी। तो ये कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो गया। अब सर इस कंसेप्ट का क्या फायदा है? फायदा ये है, द क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस इज कि दिस इज द लोकेशन फॉर द बंडल ब्रांचेस। यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस हैं जो कि बंडल ऑफिस से आती हैं, बाइफरकेट करती हैं, दे लाई ऑन द इंटरवेंट्रिकल सेप्टम। देयरफॉर मेजॉरिटी इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस द बंडल ब्रांचेस होती हैं, द राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, दे आर सप्लाइड बाय एलईडी आर्ट। सो हमने समझा एसए नोड एवी नोड किसकी ब्रांच है? मेनली आरसीए की। बंडल ब्रांचेस किसकी ब्रांच, किसको कौन सप्लाई कर रहा है? हु सप्लाइंग बंडल ब्रांचेस? मेनली द एलसीए ब्रांच। सो हमें ये ध्यान देना है कि जो कंडक्टिंग सिस्टम है, सो प्रॉक्सिमल पार्ट आरसीए सप्लाई कर रहा है, कंडक्टिंग सिस्टम का डिस्टल पार्ट एलसी सप्लाई कर रहा है। तो ये बात हो गई हमारी एलईडी। एलईडी आल्सो गिव्स द डायगोनल ब्रांचेस, जो कि लिखा है ऊपर डायगोनल आर्टरी लिखा है उसके ऊपर इंटरवेंट्रिकुलर, तो वो हमने क्लियर कर लिया। अब जल्दी से फिनिश करते हैं सर्कमफ्लेक्स। सर्कमफ्लेक्स जो आर्टरी थी, that you can very well imagine कि circumflex कर रही है, it goes around, as it goes around it gives the obtuse marginal artery। जैसे हमने राइट में देखा acute marginal artery, you can see different of the angle का difference है, तो नाम nomenclature में difference दे दिया obtuse marginal, but you have to understand कि हाँ ये obtuse marginal artery और the left marginal artery it's a branch of circumflex artery। तो ये हो गई circumflex artery की ब्रांच। अब देखिए वो जो circumflex पीछे घूम गई, जहां पर labeled है इस फिगर में circumflex, वो ऑरेंज कलर पर है, तो वो पीछे घूम गई। अब सर्कमफ्लेक्स इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ एलसीए। और अगर कल एक सवाल आता है आपके सामने कि मैंने अभी आपको आई जस्ट टोल्ड यू कि एलसीए बाइफरकेट्स इनटू टू आर्टरीज, एलएडी एंड सर्कमफ्लेक्स। आप कोई सवाल पूछे व्हाट इज द मेन कंटिन्यूएशन? मेन कंटिन्यूएशन जो एलसीए का है, इट इज द सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, बिकॉज़ इट इज आल्सो रनिंग इन द लेफ्ट कोरोनरी ग्रूव। कोरोनरी ग्रूव में ये रन कर रही है, कंटिन्यूएशन एनाटॉमिकली है। एलसी का जो मेन कंटिन्यूएशन एनाटॉमिकली इज द सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। इट रन्स पोस्टीरियरली आल्सो बिटवीन एलए एंड एलबी। जो ऑरेंज कलर सर्कमफ्लेक्स था दैट इज बिटवीन अबव एलए और बिलो एलबी, तो हमें एक एलए की भी एरिया मालूम पड़ गया। और देन यू सी द सर्कमफ्लेक्स आर्टरी पीछे जाती है, बट इट डज नॉट रीच द क्रक्स ऑफ हार्ट। क्रक्स ऑफ हार्ट पे आरसीए का दबदबा है, आरसीए हैज ऑक्यूपाइड दैट टेरिटरी एज द क्रक्स ऑफ हार्ट। सो सर्कमफ्लेक्स goes towards the crux, लेकिन उससे थोड़ी दूर पहले it ends over there normally, अगर वो left dominant circulation नहीं है। If in cases 5-10% cases में you have the left dominant, then obviously circumflex will reach the crux and circumflex will give the posterior interventricular artery। तो ये बात हो गई हमारी branches, main branches and the courses of the RCA and the LCA। I hope this point is clear। We can see the other images also sir, उसको supplement मिल जाएगा यहाँ पर। इसमें इमेज में कुछ नहीं है, बट देयर इज स्लाइट एनाटॉमिकल वेरिएशंस। इस इमेज में बस एक ही वेरिएशन है, समटाइम्स एसए नोडल कैन बी सप्लाइड बाय एलसीए। इसमें आप देखिए इस फिगर में एसए नोडल आर्टरी इज कमिंग फ्रॉम द एलसीए। सो दीस आर सम वेरिएशन जो कि किसी में भी हो सकता है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द नॉर्मल फर्स्ट की भी नॉर्मल क्या है। वेरिएशंस तो फिर कहीं भी कुछ भी किसी बॉडी में मिल सकते हैं, व्हिच आर वेरी लेस, बट वी हैव टू नो। ये हो गई बात पोस्टीरियर व्यू की ऑफ द हार्ट की। जो हमने अभी द प्रीवियस इमेज व्हिच यू आर सीइंग द एंटीरियर व्यू में जो डार्क और पेल कलर, तो ये पोस्टीरियर व्यू है। अब इसमें आप देख लीजिए पर्पल आरसीए, इसमें पर्पल आप आरसी देख लीजिए, इट इज कमिंग फ्रॉम बिलो, इट रीच द क्रक्स, जो ये सर्कल बनाया जो सर ने भी बनाया क्रक्स ऑफ हार्ट, एंड देन इट गोज बिलो एज द इंफीरियर और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। और आप लेफ्ट में देख लीजिए रेड कलर, दैट इज द सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, वो अपनी वहां पे ब्रांचेस दे रहा है। इट फिनिशेस बिफोर द क्रक्स ऑफ हार्ट, तो उससे पहले आके खत्म हो जाता है। इट इज द राइट डोमिनेंट सर्कुलेशन हार्ट, जो कि आप पोस्टीरियर व्यू में देखोगे। आई होप इट इज क्लियर। एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू ये हो गया हमारा पूरा कोर्स। सब्सिक्वेंट ब्रांचेस यहाँ पे आप ऐसे नोड एवी नोडल ब्रांचेस भी देख सकते हैं। और ये इमेज मैंने इसलिए डाली थी, नेक्स्ट इमेज जो अभी सर ने दिखाई, अगर किसी में लेफ्ट डोमिनेंट सर्कुलेशन है देन हाउ इट चेंजेस। एंजियोग्राफिक इमेज भी चेंज करेगी, देखिए कैसे होता है। Here you can see the circumflex reaching the crux and continuing below as the inferior or the posterior। ये diagram, if image based question comes and asks you anything over here, no, it is the left dominant circulation. It is the left dominant circulation. Right RCA is finishing at the crux and the circumflex is going and continuing as the posterior interventricular artery। And it is not a very good case when किसी को heart attack अगर होता है, then it has not a good prognosis compared to the right dominant circulation। वो एक अलग aspect है। So these are anterior posterior images। So can we move to the few images? हाँ, बस this I wanted to show you एक couple of angiographic images हैं, anatomy यहाँ पर। अब देखिए angiographic image यहाँ पे तो labeled है, you can very well see CN is for the conus branch
हाँ, स्टार्टिंग में there's also conus branch. Conus cordis होता है एम्ब्रियोलॉजी हार्ट में. The beginning of RC and LCA they give the conus artery. So conus artery. S is for the synodal artery. RV is for the right ventricle. RM जो लिखा है that is right marginal artery. And PIA is posterior interventricular artery. So we understood कि RCA का एंजियोग्राफिक है. RCA. अब सर ये तो आप लेबल्ड बता रहे हैं, स्टूडेंट्स का ना सर ये कैसे पहचानेंगे, एग्जाम में तो नहीं होगा. इसमें देखिए देयर इज अ सिंगल मेन आर्टरी, इट इज नॉट बाइफरकेटिंग इनटू टू आर्टरीज. ये बहुत बड़ा एक वो हिंट होता है टू सी इट इज अ राइट एंजियोग्राफी देख रहे हो और आरसीए की लेफ्ट की देख रहे हो. इट इज नॉट बाइफरकेटिंग इमीडिएटली. सो इट इज बेसिकली आरसीए. अब हम नेक्स्ट एंजियोग्राफी देखेंगे देयर विल सी द एलसीए. ये देखिए यहाँ पर, यहाँ लेबल्ड है बट इमेजिन कीजिए लेबल्ड नहीं है. When there are two arteries giving off suddenly, this is the LCA. This is the angiographic image of the LCA. अब देखिए AIA क्या है, that is LED, anterior interventricular artery. LCX क्या है, that is left circumflex artery. Left circumflex giving off OBM क्या है, obtuse marginal artery. SP क्या है, septal perforator arteries. LATR क्या, लेफ्ट एट्रियल आर्टरीज. अब PIA यहाँ पर इट कुड हैव बीन अ लेफ्ट डोमिनेंट सर्कुलेशन. L6 क्या दे रहा है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी. दिस केस कुड बी अ लेफ्ट डोमिनेंट सर्कुलेशन, जैसे हमने इमेज में देखा. PIA is coming from the LCX. It is a left dominant circulation. So, angiography में hint याद रखना. If it is bifurcating immediately, ये LCA. If it is not bifurcating immediately, it is probably RCA. तो bifurcate तो करना ही करना है. Then you can understand the कहाँ पर blockage हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा है. Other things can be easily understood. Fine. Any other images, sir? हाँ. This is just overview कि भाई circulation कर रहे हैं तो blood वापस भी लाना है. Just a couple of images to show you what are the various veins. So ये हम देख रहे हैं, we are looking at anterior view. Same thing, जो dark blue है that is anterior veins, the pale blue or the light blue color is the posterior veins. बस इतना बेसिक याद रखिए, दो चीजें. All the veins of the heart, the blood heart, coronary artery में blood दे दिया heart को, वापस आएगा vein से. All the venous drainage of the heart is the coronary sinus. Where does it open? Into right atrium. ये तो clear बात हो गई. Coronary sinus open कहाँ होता है? Right atrium में. एक exception यहाँ याद रखिए, above coronary sinus written anterior cardiac vein. These are the major cardiac veins which do not enter into coronary sinus, though they will enter into right atrium, but they don't enter into coronary. There can be a बहुत एक famous MCQ है, all of the following veins drain into coronary sinus except. आंसर इसका होता है normally anterior cardiac vein. बाकी आप यहाँ पे और veins, अब ये veins कहाँ रन करेंगे, ये भी vein, these veins run on the same aspect where you have the coronary arteries. जैसे यहाँ great cardiac vein दिखाई है ऊपर. It is running in the L, जहां पे LED है वहां पर ग्रेट कार्डियक वेन फ्लो उल्टा है. LED ब्लड नीचे ला रहा है, ग्रेट कार्डियक वेन ब्लड ऊपर ले जा रहा है. ग्रेट कार्डियक वेन ऊपर गई और पीछे सर्कमफ्लेक्स के साथ जाते जाते पीछे ड्रेन कर गई. स्मॉल कार्डियक वेन कहां है, वेयर द राइट मार्जिनल आर्टरी. राइट मार्जिनल आर्टरी ब्लड ऐसे ला रही है, स्मॉल कार्डियक वेन ऐसे ले जा रही है. मिडिल कार्डियक वेन कहां है, एट द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप. सो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी ब्लड ऐसे ला रही है, मिडिल कार्डियक वेन ऐसे ले जा रही है. ऑल ऑफ दीज हैव अल्टीमेटली टू गो टू द कोरोनरी साइनस. पॉइंट ये है, कोरोनरी साइनस में जाना है और you have to drain into right atrium RA. एक और इमेज देख लेते हैं, पोस्टीरियर व्यू है बट दैट इज द सेम थिंग. ये देख लिए पीछे से, दिस इज द कोरोनरी साइनस व्हिच यू आर सीइंग. सो दिस इट accumulates all the veins और फाइनली ड्रेन कहां कर रहा है, आप देख लीजिए IVC के पास, नियर लेफ्ट, जस्ट लेफ्ट टू द IVC के जस्ट लेफ्ट साइड में देयर इज अ कोरोनरी साइनस ओपनिंग. इफ यू लुक एट द इंटीरियर ऑफ राइट एट्रियम, अगर RA के अंदर आप इंटीरियर देखते हैं हार्ट का, जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ IVC देयर इज ओपनिंग ऑफ coronary sinus. ये हो गई बेसिक हमारा coronary circulation की बात. Some of the anomalies that we have seen. I guess this point is clear. So I hope this point is clear, sir. ये this just the casting images. इसमें जो white color है that is the coronary sinus, red color है that is the coronary arteries. अभी posterior view समझो कैसे देखेंगे सब लोग, स्टूडेंट्स सारे लोग. आप posterior view, सर posterior क्यों है, आप देखिए LA लेफ्ट एट्रियम, लुक एट द पल्मोनरी वेन्स ओपनिंग. ऐसा आपको व्यू एंटीरियर में नहीं दिखता. एंटीरियर व्हाट यू सी इज द पल्मोनरी टंक आ रही है, एओर्टा आ रहा है. पीछे आपको पल्मोनरी वेन्स ओपन दिखेंगी, IVC SVC ओपन दिख सकता है. दिस इज हाउ टू रिकॉग्नाइज इजीली कि भाई एंटीरियर व्यू देख रहे हैं कि पोस्टीरियर व्यू देख रहे हैं, RC देख रहे हैं कि LC देख रहे हैं. ऑल दीस थिंग्स कैन बी इजीली क्लियर्ड आउट बाय दिस. नाउ सर आई गेस द anatomy part I have taken measure of it and please sir if you wish you can continue with the physiology part. जी, चलिए समझते हैं अब फिजियोलॉजी को. राइट, सो एनाटॉमी में हमने सारी एनाटॉमी समझ ली. अब कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, दोज एक्चुअली हैव अ फिजियोलॉजिकल शंट्स व्हिच वी कैन सी, व्हिच बेसिकली डाइवर्ट्स द वीनस ब्लड व्हिच मिक्स इनटू द आर्टीरियल ब्लड. सो ऐसे एरियाज हार्ट में होते हैं. ठीक है, सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नॉर्मली जो थबेसियन वेव हैं
थवेसियन वैन्स हैं, उससे हमारे कार्डियक चेम्बर में चले जाते हैं, जो कि एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल शंट होता है. तो दिस यू कैन रिमेंबर द नेम. और इसके अलावा अदर कुछ और फिजियोलॉजिकल शंट्स होते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रोंकियल सर्कुलेशन से भी हमारे पल्मोनरी वेन में चले जाते हैं. सो देयर इज these are the two main physiological shunts which you can see. Now we are going to understand the coronary blood flow and its measurements, right? So coronary blood flow जो जाता है normally it is around 200 ml per minute. ठीक है, that is the 4% of your cardiac output. और अगर हम इसे भी वो ऐसे भी कह सकते हैं, that is 65 to 70 ml per minute of per 100 gram of cardiac muscle. So ये तो भैया आपको रटना ही पड़ेगा. ठीक है, तो ये बेसिक चीज है जो आपको समझनी है. अब जो 3-4 चीजें आपको याद रखनी, हाउ टू मेजर दिस कोरोनरी ब्लड फ्लो. नाउ देयर आर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड्स. ओके, डायरेक्ट मेथड में द वर्ड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर. सो इस पर्टिकुलर वर्ड को याद रखना है. सो इस पर्टिकुलर चीज से आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं जो कोरोनरी आर्टरी के अंदर प्लेस होता है. सो आई एम गोइंग लिटिल फास्ट बिकॉज काफी कुछ कवर करना है. ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट्स आप पूछ लेना. आपके कमेंट्स हम देख पा रहे हैं, राइट? सो इनडायरेक्ट मेथड ये जरूरी मेथड है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है. फिक्स प्रिंसिपल. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, हियर वी आर यूजिंग नाइट्रस ऑक्साइड एंड जो सब्जेक्ट हैं वी बेसिकली आस्क देम टू इनहेल अ गुड क्वांटिटी ऑफ गैस विद द एटमॉस्फेरिक एयर, और एक नोन क्वांटिटी जो हमें पता हो, और फिर उसके सैंपल्स लिए जाते हैं, वन फ्रॉम एन आर्टरी, second from the coronary sinus by a catheter. All right, after that जो है एक फॉर्मूला के थ्रू ब्लड फ्लो हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना नाइट्रस ऑक्साइड अपटेक हुआ है पर मिनट. ऑब्वियसली हमने आर्टरी से ले लिया और फिर हमने वेन से ले लिया, सो वी नो कि भी इतने देर बाद लिया है तो कितना यूज हो गया. सो वी नो नाइट्रस ऑक्साइड अपटेक पर मिनट, एंड देन वी कैन एक्चुअली डिवाइड इट विद द AV डिफरेंस ऑफ NO2 कंटेंट. तो इससे हम टेक्निकली ब्लड फ्लो निकाल सकते हैं. सो दिस रिमेंबर, दिस इज द फिक्स प्रिंसिपल. ओके, द सेकंड थिंग व्हिच यू कैन रिमेंबर इज ये डॉपलर फ्लो मीटर से भी यू निकाला जा सकता है कोरोनरी फ्लो. इसमें क्या होता है, यू बेसिकली यूज अ पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स जिसमें हम डॉपलर फ्लो में प्रोब लगा, आप बेसिकली ट्रांसमिट एंड यू रिसीव हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव जस्ट लाइक एन अल्ट्रासाउंड डॉपलर, और इसके थ्रू वो कैथेटर माउंट किया जाता है इन द ऑस्टियम ऑफ योर राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जो हमने देखा एनाटॉमी में, जिससे हम वेलोसिटी, फेजिक वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो लिटरली चेक कर सकते हैं. सो और इसके थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया भी डिटरमाइन किया जा सकता है आर्टरी का, विच कैन ऑल्सो बी डन बाय एंजियोग्राफी. एंजियोग्राफी से भी आप डिटरमाइन कर सकते हैं. और velocity of blood flow and cross sectional area and the volume of the blood, इन दो velocity of blood के साथ जो cross sectional area को मिला लें तो volume of blood हम calculate कर सकते हैं. ठीक है, so there is another third method is video densitometry. What is this? Here you measure both velocity and blood flow, velocity of blood flow and the cross sectional area of coronary arteries simultaneously through वीडियो डेंसिटोमेट्री. तो ये वर्ड्स आपने याद रखने हैं, डोंट रियली हैव टू गो इनटू द प्रोसेस हाउ दैट हैपेंस. जो मेन इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल चेंज होता है दैट हैपेंस इनटू द राइट एंड द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ड्यूरिंग सिस्टोल एंड डायस्टोल, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ये समझते हैं कि भी कोरोनरी आर्टरी में जो ब्लड फ्लो होता है सिस्टोल और डायस्टोल में कांस्टेंट नहीं होता, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में कांस्टेंट नहीं होता, सेम नहीं होता, सिमिलर नहीं होता. देयर इज अ बिग डिफरेंस. नाउ व्हाई देयर इज अ डिफरेंस? लेफ्ट और राइट के अलग से समझेंगे. द फर्स्ट डिफरेंट फैक्टर इज इंट्राम्यूरल जो वेसल्स होते हैं, जो फाइनल आर्टरीज हैं जो सप्लाई करती है मायोकार्डियम को. तो इन द सिस्टोल, ड्यूरिंग द सिस्टोल आपके लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि इट कैन एक्चुअली कंप्रेस द इंट्राम्यूरल वेसल्स और ब्लड फ्लो को रिड्यूस कर सकता है. सो दैट्स व्हाई ड्यूरिंग सिस्टोल एक्चुअली यू कैन सी दैट ब्लड फ्लो ड्रॉप्स. So blood flow actually drops because of this factor. Okay, because of that pressure आपकी blood vessels, coronary blood vessels are being compressed, and this is happening in the left ventricle. So this is happening in the left ventricle क्योंकि left ventricle का
थिकनेस भी ज्यादा है एंड उसके कंप्रेशन फोर्स भी ज्यादा होता है, राइट? And in diastole what happens, the compression is released and therefore the blood vessels open, और जो maximum flow होता है coronary flow, the maximum flow is during diastole. This is about the left side of the left anterior descending and left circumflex, basically left main. So these arteries basically get blood supply, the most blood supply during the diastole. तो diastole के टाइम पे blood flow होता है. And let's talk about this left ventricle. So जब isometric contraction होता है, during that part of the left ventricle, the blood flow actually declines. One, because of, we already told you about the myocardial tissue pressure, and the second reason is because of the decrease in the aortic pressure, right? That is aortic pressure because there is a isometric contraction. Valves अभी खुले नहीं है, valves अभी closed हैं, right? So aortic valve भी closed है, but then aortic valve opens. aortic valve open होता है, ejection period शुरू होता है. In this ejection period, technically aortic pressure rises because अभी तक aortic valve बंद था, अब aortic valve खुल गया है, अब pressure बढ़ जाएगा, अब flow आना चाहिए, right? अब left coronary artery में flow आना चाहिए, but then still flow capillaries तक नहीं पहुंचता है because जो contraction अभी भी चल रहा है, जो systole चल रहा है left ventricle का, that is very the intramural pressure is so high of the contracting ventricle कि वो blood flow को, जो vessels को ही दबा के रखता है. So the decreased blood flow is still maintained until and unless this systole ends. जब तक systole खत्म नहीं होता है, left coronary artery में blood supply कम जाता है. So left coronary artery का supply is more during the diastolic phase. Remember that during the onset of diastole, फिर वो फ्लो एकदम से शार्प राइज करेगा एंड लेटर पार्ट ऑफ डायस्टोल में स्लोली कम हो जाएगा, जो हमने यहां देखा. शार्पली राइज करेगा ड्यूरिंग डायस्टोल एंड स्लोली इट विल कम डाउन टू द एंड ऑफ डायस्टोल. ठीक है, जैसे ही सिस्टोल फिर शुरू होगा, जैसे सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ता जाएगा एंड जैसे सिस्टोल बढ़ता जाएगा, एक्चुअली कंप्रेशन फोर्सेस की वजह से ब्लड फ्लो और कम होगा. सो रिमेंबर दिस पॉइंट, द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी actually gets more of the blood supply during diastole. Now what about the right ventricle? Technically right ventricle is not as thick as the left ventricle. So right ventricle का जो intramural pressure है वो इतना ज्यादा नहीं होता है. So because of that right ventricle में during systole also आपके RCA में blood supply जाता है. So during systole RCA does not get closed or compressed as compared to the left coronary artery. That's why there is still blood supply going into the RCA during systole. So during and obviously during diastole तो वो और जाएगा ही, ठीक है, diastole के टाइम पे जाएगा ही. But the point here is that RCA gets supplied during systole and diastole, and the LCA actually area gets supplies more during diastole then whatever systole पे तो बिल्कुल कम ना के बराबर जाता है. So this is the point which you need to remember. Now we discuss the regulation of coronary blood flow. What are the factors? What regulates coronary blood flow? Because whenever we are talking about angina or infarction or any kind of block atherosclerosis, there has to be some auto-regulation mechanisms. And whenever we increase the demand, if you are exercising, if you are doing some kind of, if you are having any kind of high output, any tachycardia because of any reason, obviously coronary oxygen demand, coronary metabolic demand will increase and coronary blood flow needs to be increased. So there has to be some auto regulation. Okay. All right. So first thing to remember here is that coronary blood flow is not really affected when the arterial pressure, the mean arterial pressure is between 60 to 150. Okay. So how's that auto regulation done? These are four big factors which actually regulate the coronary blood flow. First is the need for oxygen, which will increase during exercise. Okay. Second is the metabolic factors. Again, a lot of factors can increase your metabolic demand. Coronary perfusion pressure and nervous factor. हम एक एक करके सबको देखेंगे. So what need of oxygen
It basically compasses what कि resting condition पे भी कई बार a large amount of oxygen is needed, like 70 to 80% is consumed from the blood by the heart than the other actual tissues, right? We take a lot of oxygen from that coronary blood supply as compared to other tissues. Normally, other tissues can take 30%, up to 30% of oxygen from the blood supply which is reaching there, and heart actually coronary cardiac muscles, they take 70 to 80% of the blood supply because their need for oxygen is more. Okay, so if there is any hypoxia, it can immediately cause coronary vasodilation. So this is the factor. The first important factor is hypoxia. Any reason of hypoxia, be it anemia, be it any respiratory cause, be it a coronary obstruction, any hypoxia immediately will stimulate coronary vasodilation and increases the blood flow to the heart through vasodilation. How that happens, we'll discuss. मेटाबॉलिक फैक्टर्स क्या है? कोरोनरी वैसोडाइलेशन जो हाइपोक्सिया के टाइम पे हो रहे हैं, दैट बेसिकली ऑकर्स बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो कि कोरोनरी ब्लड फ्लो में कोरोनरी आर्टरीज में ही पैदा होते हैं. So these metabolic products actually lead to vasodilation. Now, what are the metabolic products and how that happens? First metabolic activity is reactive hyperemia, meaning there is increased blood flow just because of the vasodilator effect of the metabolites. What metabolites? First metabolite is adenosine. First and the most important metabolite to increase the blood flow causing vasodilation in the coronary arteries is adenosine. Adenosine एक बहुत अच्छा potent vasodilator है. और होता क्या है? Normally ATP, it basically hypoxia mein ATP is converted to ADP, and this adenosine diphosphate, some of it can be converted to adenosine, and this adenosine actually is a potent vasodilator which increases the blood flow to the cardiac muscle. So जितना भी hypoxia होगा उतना body try करती है blood flow बढ़ाने की, and one of the most important method is adenosine. The second, many other vasodilators are also present: potassium, hydrogen, carbon dioxide, and then adenosine phosphate compounds are also some of the metabolites which can cause vasodilation. So ये methods याद रखना यहाँ पर. Then there is something called perfusion pressure. What is this? Perfusion pressure is balance between mean arterial pressure and the venous pressure. The venous pressure is basically the right atrial pressure. Technically speaking, जो right atrial pressure वो बहुत low होता है, right, as compared to the mean arterial pressure. इस वजह से जो main driving factor हो जाता है coronary perfusion का, that is the mean arterial pressure. So इसलिए mean arterial pressure आपको maintain करना होता है in any kind of case of angina, ischemia. अगर आप उस blood vessel को खोल देते हैं, if you actually do a PTCA, if you do a percutaneous coronary angioplasty, and if the mean arterial pressure drops, then in that situation there is a very high chance that वो बंद हो जाएगी फिर से blood vessel. So mean arterial pressure has to be maintained so that the coronary perfusion is maintained. This is more important. Okay. Then what about the nervous factors? There are nervous factors because here coronary vessels have autonomic control. So there is sympathetic and parasympathetic division, which basically controls they do not really control the coronary blood vessels. They actually influence the muscles of the heart. So basically they influence the musculature, thereby increasing the demand or increasing the heart rate, increasing the contraction, increasing the cardiac output, increasing the workload. Therefore, they basically increase the metabolites which we just saw, और वो metabolites बढ़ने के वजह से हमारी vasodilation होता है. तो indirect effect है आपके nervous factors का, autonomic और sympathetic, parasympathetic and sympathetic nervous. For example, अगर sympathetic stimulation हो रहा है तो obviously what will happen, your force of contraction, your heart rate, it will increase. In turn ज्यादा metabolites होंगे, in turn those metabolites adenosine and all जो हमने देखे, they will dilate the blood vessels, they will increase the coronary blood flow, and the need
for more oxygen for the increased demand is met, है ना? So if there is a similarly opposite effect, अगर parasympathetic vagus system activate होता है, what will happen? The cardiac functions are inhibited, production of metabolic is reduced, and coronary blood flow is decreased. All right. So this is the nervous factor where the control lies. So very important about this is the inadequate blood supply whenever there is an occlusion to the coronary arteries, also called coronary heart disease. कोरोनरी हार्ट डिजीज में पार्शियल या कंप्लीट ऑक्लूजन हो जाने पे इट डज नॉट मीन दैट ऑल दीज कोरोनरी मैकेनिज्म्स विल नॉट वर्क. स्टिल all the coronary mechanisms जो हमने देखे, they are active and they will try to adjust the situation as much as possible, right? And we know coronary occlusions atherosclerosis के वजह से होता है, and we understand how plaque happens. We have all studied that in the relevant chapters in pathology. So यहाँ पर cholesterol, calcium and other substances, basically they form the plaque, and plaque will actually obstruct the lumen. Somehow because of that आपका जितना ज़्यादा lumen obstruction उतना ज़्यादा coronary flow will get hampered. All right. So once there is a plaque, and in any case, if there is a thrombus formation in addition to the clot, then the obstruction can become an acute occlusion. वहां पर अगर 100% occlusion हो गया या significant 90-95% occlusion हो गया, so it can lead to ischemia or infarction. So both of the things can happen. And in addition to all these blockages, coronary arteries can also have spasms. So we know that कि spasm भी होता है coronary arteries में, and occlusions भी होते हैं. Can be partial, can be complete, can be in addition to the occlusion, the plaque, there can be a small clot which is developed there, or it can sometimes come from outside like an embolus. So clots or some kind of thrombus can actually come from the outside, or majority the plaque embolus they develop there and then, और वो occlusion जो है आपका आगे चल के छोटी blood vessel को block कर सकता है. So that is an embolus, right? And what is ischemia and infarction? Whenever the compensatory mechanisms of the heart in response to the reduced blood flow due to these blockages are not able to compensate, there is a severe occlusion in coronary arteries. आर्टरीज आपकी थक गई है, वो मेटाबॉलिक वेस्ट आपके एडिनोसिन बना बना के कितना बना लेगी. याद रखिए, दे आर यूजिंग 70 to 80% of the oxygen of the blood supply which is coming to them, right? Consider if that 70 to 80% of blood supply is blocked, 80% of blood supply is blocked, that means only 20% of blood is coming, and out of this 20% the body has to use 70 to 80. So basically it will tend to take 100% of whatever oxygen is coming to them. So they will try to manage as much as possible, and that particular person will not be able to exercise. So that's why somebody who has a significant blockages will tend to have a reversible myocardial ischemia, which we see in a treadmill test or something like a stress test, right? So here जो सारे compensatory mechanism are still active, right? So they will be trying to increase the vasodilation in the coronary arteries. Everything will be there, so वो रहेगा. Plus remember, in ischemia also the blood supply will reduce during systole. So what happens? Consider this: if there is a increased heart rate, so if there is an increased heart rate, what will happen? The duration of diastole decreases. If the duration of diastole decreases, what happens when we are talking about the left system? Left system is basically getting the blood supply during diastole, and if the duration of diastole decreases, tachycardia will become detrimental to that patient, right? Tachycardia से और दिक्कत हो जाएगी. So these are the understanding which we हम अप्लाई कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ पैथोलॉजी हैपेंस, कैसे बीमारियां आगे काम करती हैं, राइट? सो इस्चीमिया हमने देख लिया कोरोनरी ब्लड वेसल्स में. नाउ देयर इज वन मोर थिंग that is relevant, which is the coronary collateral arteries. So what happens if this particular type of ischemia happens slowly over a long period of time and the person is physically active? What happens? There is a possibility that the collateral blood vessels, they can develop, right? So whenever there is a blockage here and there are some branches behind that particular blockage, the pressure inside those branches will increase and force those branches slowly to expand. So this happens over a long period of time,
and person who is having uh, an ideal environment, okay, technically exercising well, nutrition is well. So those are many factors which actually affect coronary collateral arteries. So ये एक अलग टाइप की चीज है जो आप आगे देखेंगे. ठीक है. Now we know what is necrosis, and if there is any kind of tissue, any tissue in the heart which is not able to get enough blood supply, so ischemia can actually convert into infarction. So if there is actually infarction, that means those cardiac myocytes might be dying, and if there is a death, then if they die, the necrosis can develop in the localized area. Ultimately, ischemia leads to infarction and necrosis. If it is a very large part of the myocardium, then the heart, there can be severe complications, even it can lead to death. Okay, and once the necrosis develops, necrosis is irreversible. So that's why myocardial infarction is the most serious disease, leading to the number one cause of death in the world. ठीक है. So remember, अभी यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स हैं. एक तो थ्रोम्बस है, इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो है, कई बार एम्बुलस आ जाता है, कई बार वेसल स्पाजम्स हो जाते हैं, कई बार मल्टीपल फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं, राइट. एंड ऐसा तो है नहीं कि एक जगह जहां इन्फेक्शन हो रहा है वहां स्पाजम भी नहीं हो सकता, वहां थ्रोम्बस नहीं आ सकता. समटाइम्स मल्टीपल थिंग्स हैपन टुगेदर. So remember the possibility of all these things. And then there is something called as myocardial stunning. Now stunning क्या होती है? Sometimes there is a transient mechanical dysfunction of the heart, in which there is a mild to moderate, sometimes severe reduction in the blood flow. Because of this, the coronary blood flow, reduced blood flow, can cause ischemia. Now this stunning can even many times lead to, substantial reduction, can sometimes lead to necrosis also. But most of the times myocardial stunning is reversible, is very much, 100% gets reversed if the blood supply is restored in time. So remember, it's all about time. So whenever coronary blood flow की बात आती है, अगर वहां पे कोई भी compromise हो गया, time, there is a golden period which you will study in medicine. And this is all about physiology. Now we take some questions about anatomy and physiology of the heart, of this coronary circulation. Okay. So handing over to Dr. Ankit. Yes, sir. Uh, sure. So beautifully explained the physiology part. Very interesting. Now let's see some MCQs from the anatomical aspect. I hope you didn't forget anatomy. Just discussed half an hour back. So here's the question. The question says that the 58-year-old patient presents himself to the emergency with a severe angina. Upon cardiac catheterization, it is found that he has a significant occlusion in his right coronary artery, just distal to the right sinus of the aortic wall. So just at the beginning of the RCA, he had a occlusion. His collateral circulation is minimal. Assuming the patient is a right dominant circulation, which artery would be most likely to still have a normal blood flow? So here they are saying that the RCA at the beginning had occlusion, and imagine he had a right dominant circulation, which artery will still have a normal blood flow. Here are the four options, and the four options over here are options A, B, C, D. The right marginal artery, then we have the AV nodal artery, posterior interventricular or anterior interventricular. So here we have to find out the branch which is not from the RC direct, and as we already discussed in the question, that which are the branches of RC and LCA. So anyone wants to answer over here, he can answer as ABCD. He can simply answer as ABCD. And I guess, just let me see if anyone is responding over here, which is not a branch of the RCA. And here we have discussed the LCA, which suddenly bifurcates. The answer is our option number D, that is fourth option, anti-interventricular, or also known as the left anterior descending artery. So these are the questions that can come. Yeah, I guess we have a couple of more, one or two more, if we can see. Yes, similar sort of question with the anatomical part of the coronary circulation. 55-year-old underwent bypass operation. The artery of primary concern is the vessel that supplies much of the left ventricle and the right and left bundle branches of the cardiac conduction system. Which artery is the surgeon most concerned with? So here we have to figure out artery which is supplying LV as well as the bundle branches. Here we have seen already in the
session, the beginning of part of the session, that it was the LCA branch LED which gave up the bundle branches. So answer over here will again be option number second, that is B, anterior interventricular artery, also known as the LED artery. So these are the ways the questions will come in a clinical sort of picture, but we have to know the basics. Again, a fine question over here. Are given angiogram with the recurrent angina reveals a 90% stenosis of the LED. Based upon the finding, which portion of the heart is most likely susceptible to ischemic damage? So again, we are focusing more on LAD because it is the most common artery to get occluded. So we have seen in that images that the whole interventricular septum and how many part of the interventricular septum is supplied by LAD. So answer over here is option number first, that is the anterior two-third. Anterior two-third is by the LAD, the posterior one-third is by the posterior interventricular or the inferior interventricular. AV nodal comes from the RCA branch, and diaphragmatic surface of left ventricle, again that will be supplied by either by the posterior interventricular or the circumflex artery. So these are the questions which can come from the anatomical aspect. And one more last, I guess, would be over here about the veins over here. Look at the question and how they are combining the artery with the vein. That a 48-year-old is admitted with a chronic angina. Coronary angiography reveals a nearly total blockage of the circumflex artery near its origin from the LCA. When this artery is exposed to perform a bypass, now you are in an OT, you are doing a bypass procedure, what vein must be protected? So you are operating on a circumflex artery. What is the vein that accompanies that artery? So you should be protecting it because vein is fine. And you've seen the venous drainage. The great cardiac vein that was running anteriorly, then it went behind with the circumflex artery and into the coronary sinus. So answer of great cardiac vein would be the answer over here. And the middle cardiac vein is basically with the posterior interventricular artery. The small cardiac vein is with the right marginal artery, and so on and so forth. We should be knowing that basically the whole point of the anatomical part of it was you should know where the location of the artery and accompanying vein, what are the branches given up by the arteries, and some common anomalies. These are the main things, and sir has beautifully explained the physiology part of it. Very interesting, and thank you, sir, for my revision also. We forget these parts. Learned so many years back. So it was really a nice session, sir. Beautiful knowledge and beautiful explanation, physiological aspect of it. I hope you all guys enjoyed this, and over to you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, Dr. Ankit. Even the anatomy part was very interesting. So thank you so much. And I really enjoyed this integrated session. And I hope the students would enjoy the same. And please do subscribe to this channel. And please like and share this video as much as you can so that many students can benefit. And please do subscribe and join Dr. Ankit and myself on Unacademy. So you can join us, and hopefully you will see the links below in the description to join us there. And thank you so much, and we will see you next time. And please keep coming. Thank you. Take care. Good night. Good day. Thank you. Thank you.